A new political party will take shape in Odisha on January 12, coinciding with National Youth Day. The announcement was made by senior leader Mohammad Mokim, a former Cuttack MLA who was recently expelled from the Congress on charges of anti-party activities. Speaking to OTV, Mokim said the proposed party will prioritize young leadership, especially from the coastal districts of the state. He added that the formal groundwork for the new political outfit will begin on January 12. Mokim further stated that the party's official formation is expected in the last week of March. He revealed that the name of the party will retain an association with the Congress, though a final decision is yet to be taken. According to Mokim, consultations are underway to finalize the name, including discussions with astrologers. Responding to speculation about the political future of his daughter, Sofia Firdaus, Mokim clarified that she would take her own decision independently. The announcement has triggered fresh political buzz in Odisha, particularly at a time when the opposition space in the state is witnessing significant churn. आगामी 12 तारीख दिन युवा दिवस दिन आम कोस्टाल बेल्ट रो जो माने बछा बछा युवा नेता माने सब अछंती कांग्रेस दलरू बिजु जनता दलरू एवं जो माने यूथ डॉक्टर माने अछंती मो संग पूरा टीम आसी आलोचना करथिले तो गोटे आग्रह समस्त पाखे सृष्टि होती जो ट्रेडिशनल स्टाइल ले कांग्रेस दल कि बिजु जनता दल कि भारतीय जनता पार्टी चली ये समथिंग डिफरेंट होगा चाहूँगी एवं ये केवल ओडिशा इश्यू को ये बेस करेंगे लोकल जोटा आम आवश्यकता अच्छी ताकू नहीं कार्यक्रम करेंगे टेंटेटिवली आम भावुँ मार्च शेष सप्ताह बेलू ये सबू कार्यक्रम हो आम लोकों रास्ता गोलैया व्यवस्था कर से गोटे कांग्रेस दलर विधायिका अच्छी तेणु से कटक सहर बुद्धिजीवी द्वारा मनोनीत निर्वाचित होती से निष्पत्ति नब ता निष्पत्ति से नब से कौटी रही तार भविष्य ठीक रहा कौ दिशा जीव मुझे किसी आलोचना करने चाहिए नहीं कि ता संगे मुझे आलोचना विषय करना।